Okay, so G1 में what we said here, ploidy is 2n and 2c. समझा था ये? यस मैम। यहाँ पे बोलिए सेम 2n 2c, यहाँ सेम था क्या? यहाँ पे 2n 2c 4c 4c होता मैम। बोलो ना फिर 2n 4c, यहाँ पे 2n एंड सेम, यहाँ पे 2n 4c, यहाँ पे सेम है। 2n 4c, यहाँ पे यस। यहाँ पे बोलो एनाफेज में क्या था? मेटाफेज, you know all they are arranged at the मेटाफेज प्लेट, है ना? यहाँ पे सब अरेंज हो गए आके, एक ही लाइन है, मैंने बोला था ये ध्यान में रखो, यहाँ पे एक ही लाइन है। मियोसिस में यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे वो, तो माइटोसिस में एक ही लाइन बना रहे, 2 लाइन बनाते तो दैट इज अ मियोसिस, बिकॉज दे विल गिव यू डायग्राम। सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि ये मेटाफेज है, ये पूछेंगे कि मेटाफेज है किसका है, माइटोसिस का मेटाफेज है या मियोसिस का मेटाफेज है। तो मियोसिस के मेटाफेज में आपको 2 लाइंस दिखेंगे क्रोमोसोम के, माइटोसिस की मेटाफेज में आपको एक ही लाइन दिख रहा है ना? तो यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, है ना? दैट वी डिड। तो आगे अगर मैं आती हूँ तो वो पूरे सब आके मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन नेक्स्ट, they are coming into the anaphase. So anaphase में I said the number of active centromer is equal to number of chromosome. तो यहाँ पे active centromer ये सब अभी split हो रहे है ना? मेटाफेज में कल भी मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे अनदर पोल, दे आर कमिंग इनटू द सेंटर, एंड ये जो है वी कैन स्टडी द प्रॉपर मॉर्फोलॉजी। अभी यहाँ पे वी सेड प्लॉइडी इज 2n is equal to 4 क्रोमोसोम। ओके, नाउ दिस क्रोमोसोम, तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉ भी किया था, है ना? एंड हियर देयर इज अ सेंट्रोमर। तो ये सेंट्रोमर जो है, द सेंट्रोमर इज गेटिंग स्प्लिट फ्रॉम बिटवीन, यहाँ से जो है सेंट्रोमर स्प्लिट हो रहा है ना? सेंट्रोमर अगर स्प्लिट हो रहा है तो एक पोर्शन इसका, एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर निकल जाएगी, एक सिस्टर क्रोमैटिड नीचे रह जाएगी, राइट? समझा क्या? यस मैम। एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चली जा रही है, ये इरेज हो गया। तो इसका जो एक पार्ट है, सेंट्रोमर स्प्लिट हो रहा है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट इवेंट। देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर स्प्लिट हो रहा है और सेंट्रोमर का आधा पार्ट ऊपर जा रहा है, आधा पार्ट नीचे जा रहा है। यस्टरडे आई सेड कि अगर 1 सेंट्रोमर है तो 1 क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमर है तो 2 क्रोमोसोम, 3 सेंट्रोमर है तो 3 क्रोमोसोम। तो जितने एक्टिव सेंट्रोमर उतने क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? बिकॉज दिस इज अ सेंट्रोमर, ये स्प्लिट होके ऊपर चले गए। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, एक पोल पे उन्होंने खींच लिया, एक ने एक पोल पे खींचा, दूसरे ने दूसरे पोल पे खींचा। तो यहाँ पे जो 4 क्रोमोसोम थे पहले वाले मेटाफेज तक, 4 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बन गए? 8 बन गए ना? तो व्हाट वी सेड कि अपना प्लॉइडी हम लोग यहाँ पे आए थे एनाफेज में। मेटाफेज में क्या था? इट वाज 2n/4c, यहाँ तक ऐसे था ना मेटाफेज में, और G1 में था 2n 2c, बाकी सब जगह पे सेम था। तो G2s प्रोफेज में 2n 4c था। तो अभी एनाफेज में प्लॉइडी कितना हो गया? डबल हो गया ना? मतलब क्या बन गया? 4n बन गया ना? ये समझा क्या आपको? यस मैम। सबको समझा था क्या ये? इसलिए मैंने कल वीडियो भी वापस से भेजा कि आप समझो ये बात। किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज। या नो मैम। सगळ्यांना कळलं?
बिकॉज इथे क्रोमोसोम नंबर डबल होते. सो यू गेट क्वेश्चन, एनाफेज में प्लॉइडी कितना बन जाता है. तो एनाफेज में प्लॉइडी कितना बन गया? 4n. 4n बन गया. अभी मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ. सुनो, एनाफेज की एक पोल पे प्लॉइडी कितना है? एनाफेज 2n. प्लॉइडी 4n है. एनाफेज की 2n. एक पोल पे 2n. कितना है? 2n है. तो इधर 2n आ Yes. गया, इधर 2n आ गया. बट ओवरऑल क्योंकि सेल को अभी डिवाइड नहीं हुआ है ना बीच में से, तो ये एक ही सेल में चल रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म में चल रहा है अभी तक. तो उसका एक पोल पे प्लॉइडी रहेगा 2n. तो आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है. यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके. As each chromosome move from the equatorial plane, the centromer of each chromosome moves towards the pole. Okay. तो अभी जो मेटाफेज प्लेट पे यहाँ पे आके रुके थे ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, तो अभी उनको खींच लिया. आधा इसने खींचा, आधा इसने खींचा. खींचा तो क्या किया? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया, सॉरी सेंट्रोमर हो गया. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर हो गया तो प्लॉइडी बढ़ गई. जब तक सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग नहीं होगा प्लॉइडी नहीं बढ़ेगा. तो ये भी ध्यान में रखिए, सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग होता है सिर्फ माइटोसिस में. centromer gets split only in mitosis. Centromer is not getting splitted in meiosis. ये again important point आपको meiosis में लगेगा. तो यहाँ तक समझा? So you keep drawing the diagram as well. हाँ, तो आपको समझेगा और डायग्राम में जो मैं बोल रही हूँ आप समझ के लीजिए. तो सेंट्रोमर में स्प्लिटिंग हो गया. I can wait for you till you draw the diagram. ओके. सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग हो गया, इसीलिए इसका प्लॉइडी बढ़ गया. सो नंबर ऑफ सेंट्रोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये मैंने बहुत बार आपको बताया है ना. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो वापिस से आप ऑडियो Yes, वीडियो ma'am. बंद करके हाँ. बैठिए. हे भगवान क्या करे तुम लोगों का. Okay, so anaphase stage is characterized by two main key events. देखो, anaphase is characterized by two main events. Centromer split. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा है ना. Centromer split at which stage? तो centromer split at anaphase. And chromatids move towards the opposite pole. Chromatids, जो दो chromatids थे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया. And so number of chromosome increased, ploidy from 2n turns to 4n. Ploidy at one pole is 2n, overall ploidy is 4n. So centromer split and chromatid separate, and chromatid move towards the opposite pole. So that is the main feature in case of anaphase. Right? Chalo next. Anaphase clear सबको? Yeah? Yes. Okay, चलो next. Yes, ma'am. Telophase. Now we are towards the end. अपना anaphase में क्या हो गया था? Anaphase में 4n by 4c. अपने को क्या चाहिए? 2n by 2c था initial cell and we need 2n by 2c. ये अपने को दो सेल चाहिए. तो क्या होगा देखो अभी anaphase में. So chromosome reached to their respective pole. ये हो गया था anaphase में. And finally decondense and lose their individuality. इसका मतलब क्या समझ रहे हो? Chromosome reached to their respective poles. Finally decondense मतलब क्या? ये जो था वो starts to become the fiber. Correct? Decondense हो गया. Condense होना मतलब इधर से इधर. तो दिस इज अ कंडेंस. और डीकंडेंस होना मतलब इधर से इधर. समझा क्या? Yes. हाँ. सो दे डीकंडेंस. Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखिए. एंड नाउ क्या दिख रहा है आपको? पहले एनाफेज में ये पूरा सेल था, ऐसे था है ना. अभी यहाँ से सेल फरो फॉर्म हो रहा है. तो ये जो सीधा था यहाँ से कभी फरो फॉर्म हो रहा है. And they are now in the process of forming the two cell.
Okay, so now this telophase is the final stage and the individual chromosome can no longer be seen. हाँ, तो क्रोमोसोम ऐसा नहीं दिखेगा, that will turn into chromatin and they will go exactly in the each pole. So telophase is said to be the reverse of prophase. ओके, तो मुझे बताइए आप प्रोफेज में क्या क्या हुआ था. टेल मी व्हाट हैज हैपेंड इन प्रोफेज. नंबर 1 क्या हुआ था? बोलिए. Condensation started. सॉरी, Condensation started. Condensation Not started completed. but not completed. Second, Nucleolus is absent. nucleolus disappeared. Nuclear membrane starts breaking. Nuclear membrane starts disappearing. 4, Chromatin has thickened. yeah, so this condensation started. और क्या हुआ? Endoplasmic reticulum Golgi complex broke down into the vesicles, है ना? तो वो जो सेल ऑर्गेनेल, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपके पास नोट्स है तो साथ में लेके बैठिए. क्या हुआ था? सेल ऑर्गेनेल Enlarged. हाँ, सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. ओके, इसके अपोजिट सब यहाँ पे हो रहा है. सो कंडेंसेशन स्टार्टेड, यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्टेड. सो यहाँ से वो इधर तक जा रहे हैं. सो डीकंडेंसेशन स्टार्ट. न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहाँ पे न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखे, यहाँ पे वो हर एक सेल में अभी दिखने लगेंगे. It will start appearing. So you understand? Chromosome moves toward poles पण होता का? Chromosome move towards pole नहीं. Chromosome move towards pole in anaphase. क्रोमोसोम नहीं. अच्छा सेंट्रोजोम है ना? ये होता. And chromosome arranged in one line in metaphase. हर एक phase का कुछ ना कुछ characteristic है. So this phase is the final phase and chromosome no longer be seen and chromatin material tends to collect in a mass. तो chromatin material अभी अपना individual chromosome नहीं दिखेगा, वो पूरा intermingled हो जाएगा, पूरा वो DNA का mass दिखेगा. Okay, so that phase is called as a reverse of prophase. आपको question आता है, which phase is the reverse of prophase? So this is a telophase. Any doubt with this? No. Yeah, clear? No, ma'am. Yes. मॅम स्लाइड मागे करता का प्लीज? हे माझं लिहिलेलं मिटव का की राहू देऊ? काही नाही चालेल. Thank you. Okay, चलो. So telophase stage shows the following key events. हाँ, chromosome cluster at opposite जे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं and their identity lost as a discrete elements. म्हणजे काय, हे असे इंडिव्हिज्युअल जे होते ते आता असे झाले. So we don't know what exactly it is. Okay, which chromosome it is. Nuclear envelope assemble. So opposite म्हणतोय ना आपण. So nuclear envelope starts assembling. Nucleolus Golgi complex and ER reform. So now let me ask you, what is a ploidy in telophase? 4n. 4n चे अजून है ना, 4n आणि 4c चे अजून. करेक्ट ना? कारण आता त्यांना जायचंय पुढे. Yes, ma'am. आपण आधी सायटोकायनेसिस करू, मग आपण एमसीक्यू करू. कारण आता हे पुढे जाणार आहे सायटोकायनेसिस. बोल बोल मॅम बोल ना. मॅम ती टीलोफेसची स्लाइड दाखवा ना एकदा. ओके, ओके. सो दिस इज अ टीलोफेस है ना. हे बघा इथे अॅनिमेशन दिसतंय. इथे परत सगळं आपापल्या पोलकडे झाले आणि हे मेम्ब्रेन यायला सुरुवात झाली.
क्रोमोझोम क्रोमॅटिन फायबर मध्ये इथे चेंज होतंय बघा, समजतंय ना. सेंट्रोमर आपापली पोझिशन घेऊन टाकलेली आहे. आता फक्त ह्यांना डिवाइड करायचं. ओके, ह्यांना डिवाइड करायचं म्हणजे आपल्याला करायला लागेल सायटोकायनेसिस नाव. क्लिअर आहे का? Yes. जाऊ पुढे. गौतम, Yes, ma'am. so now cytokinesis. So what is a cytokinesis? The process in which cytoplasm of a cell is divided to form two daughter cells, right? That is the process. आता आपल्याला 4n4c होतं, so we want 2n2c and 2n2c. Correct? Now, so this process of cytokinesis is different in different animal cell, in animal cell and in plant cell. So now what is happening? See, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but also the cell itself divided into two daughter cells. So this was a telophase. This was a telophase. Okay. Now in the late telophase, this furrow starts appearing. So if it is an animal cell, लक्षात घ्या, if it is an animal cell, it starts with the formation of cell furrow. It starts with the formation of cell furrow. Constriction होतं आणि तो furrow पुढे पुढे जातो. Okay, and this type of cell division or cytokinesis is called as centripetal. This word is very, very important. Centripetal. You get question. Cytokinesis in animal cell is centripetal or centrifugal. So it is centripetal. Centripetal काय? पेरिफेरीत ना बाहेरून सुरू होत आहे ते. हे बघा, इथून बाहेरून सुरू होऊन ते आतमध्ये चाललंय, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड. सो बाहेरून सुरू होऊन ते आतमध्ये जातंय. हियर यू कॅन सी द फरो हाऊ इट इज फॉर्मिंग. है ना, बाहेरून सुरू होऊन आतमध्ये गेलं आणि सेल फायनली, सो हियर इट वॉज अ लेट टीलोफेज, 4n/4c होतं इथे. And now this has become 2n/2c and 2n/2c. So this particular is a cell furrow formation and that is a सेंट्रीपेटल. पेरिफेरीत ना आतमध्ये आले. पेरिफेरी म्हणजे बाहेरचा भाग, बाहेरून ते आतमध्ये आले. प्लांट सेल मध्ये ह्याच्या अपोजिट असतं. ओके, सो हियर इन केस ऑफ हे जे आहेत ना, दीज आर कॉल्ड ॲज, दिस इज अ रिंग. मध्ये एक रिंग तयार होते, कॉन्ट्रॅक्टाइल रिंग हियर. ओके, and this contractile ring is made up of, this contractile ring is made up of actin and myosin protein. Actin and myosin protein, if you remember the last lecture, this actin and myosin protein is called as a microfilament. जर तुम्हाला microfilament, intermediate filament आठवत असेल तर these are the microfilament. So दोघांचा रोल, दोन्ही टॉपिक एकत्र करून तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारता. व्हॉट इज द रोल ऑफ मायक्रोफिलामेंट? सो मायक्रोफिलामेंटचा रोल इज इन सायटोकायनेसिस. ओके, मध्ये ही जी मिड बॉडी किंवा एक रिंग तयार होते, कॉन्ट्रॅक्टाइल रिंग, ही जी मध्ये इथे बघा, इथे जी कॉन्ट्रॅक्टाइल ही रिंग तयार होतीये, दॅट रिंग इज मेड अप ऑफ ऍक्टिन अँड मयोसिन प्रोटीन. आर यू गेटिंग दिस? So this is the type of cytokinesis in animal cell. So cytokinesis in animal cell is by formation of cell furrow and it is centripetal. Centripetal म्हणजे furrow form होतोय तो बाहेरून आतमध्ये जातो. So this furrow is from outside to inside. Okay, आणि हे मध्ये जे येत आहे that is actin and myosin protein. This is called as a microfilament. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Now in animal cell, cytokinesis is achieved by appearance of furrow in plasma membrane.
और सेल मेम्ब्रेन, कारण त्यांना सेल वॉल तर नाही है ना. सो इट इज by the appearance of furrow in plasma membrane, and the plasma membrane furrow gradually deepens and ultimately forms a two cell. So this cleavage ultimately form two cell. So आपली जी original cell होती तसे आपल्याला आता दोन सेल मिळालेले. So that is in case of animal cell. So the cell has got the two daughter cells. So 1 2n now has formed two cell with same 2n and 2n. As this mitosis is carried out in all somatic cells, सगळे बॉडी सेल. ओके, आता प्लांट सेलचं बघा. प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल आहे. ओके, so the cell wall is very rigid in case of plant cell, and hence plant cell cytokinesis is having a different mechanism. Now what is a different mechanism? See, plant cell मध्ये, this is say the plant cell. Okay, इथे आतमध्ये there are the, I'll use a different color. So here there are the Golgi complex. Okay, then it also taking the help of this endoplasmic reticulum. Again the Golgi complex and endoplasmic reticulum. So they get arranged. Okay, the fragment of Golgi complex, लक्षात घ्या मी काय म्हणतेय, fragments of Golgi complex and endoplasmic reticulum get arranged exactly in the center after the telophase, because you know plant cell is not having centriole, correct? Plant cell मध्ये centriole आहेत का? Yes or no? नाही. No, ma'am. Right. So what do they have to form the spindle fiber? Yesterday I discussed this. What do they have to form the spindle fiber? आपण असा एक डायग्राम काढला होता, and I wrote here some name. काय लिहिलं होतं मी इथे? They have what? They helps to form the spindle fiber because they do not have centriole. ह्याला काय म्हटलं होतं आपण, आठवतं? मटॉक असं म्हटलं होतं ना. Microtubule organizing center. Yeah, so these are the microtubule organizing center, microtubule organizing center that helps to form the spindle fibers. है ना? मग ह्यांचं कसं होतं की like see the fragments of Golgi complex and endoplasmic reticulum get arranged in the center, right? And this basically the Golgi complex is having the major role, and Golgi complex चे जे parts आहेत किंवा fragments आहेत, those which get arranged, they are called as phragmoplast. कळतंय का बघा? Yes, कळलं हे? So these fragments get arranged in the center and finally ते सगळ्या center मध्ये असे arrange होऊन जातात. If you get question which cell organelle is having important role in forming cell plate in case of plant cell cytokinesis, so that is a Golgi complex, majorly Golgi complex. So phragmoplast which are formed is from the Golgi complex, and the fragments of endoplasmic reticulum also helps, but the major is Golgi complex. Now in case of plant, this forms a fragment that is from center towards the periphery. असं फॉर्म होतं ते, from center towards the periphery. Animal मध्ये फरो म्हणजे from periphery to the center येत होतं ना, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं, सेंट्री, काय म्हटलं आपण त्याला, सेंट्री पेटल. And this is from center to periphery, so this is centrifugal. This is a centrifugal. Got this? Yeah? Yes, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Yeah. आणि मग ही जी आहे, पुढे डायग्राम एका मला बघू द्या.
मी हे इरेज करू. आय होप यू हॅव ड्रॉन द डायग्राम अगेन. Yes, ma'am. Yes. तो मॉडिफिकेशन आलं. ठीक आहे. फॉर्मेशन ऑफ सेल स्टार्ट्स इन द सेंटर अँड ग्रोज आउटवर्ड मीटिंग एक्झिस्टिंग लॅटरल वॉल. आता मी फक्त मधला पार्ट काढते आणि म्हणून मग हे ही सेल वॉल तर बाहेर आहे. कन्सिडर दॅट आय एम जस्ट ड्रॉइंग प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हा, आणि बाहेर ही सेल वॉल तर आहेच प्लांट सेलला. ओके. आणि मग हे मधून अशी सेल प्लेट फॉर्म झाली आणि ती पेरिफेरीला गेली. सो दिस हे जे मध्ये पार्टिकल्स होते दॅट वॉज अ फ्रॅग्मोप्लास्ट अगेन and the cell is breaking down into two. And later on हे जे मधलं होतं ना, ज्यांनी सेल प्लेट फॉर्म केली होती फ्रॅग्मोप्लास्टनी, that is called as, if you remember, that is called as middle lamella. So what does middle lamella do? What does middle lamella do in plant cell wall? Yeah, I have shared the entire playlist with you yesterday. So what does the middle lamella do? So this is one plant cell. This is another plant cell. या दोघांच्या मध्ये काय असतं इथे? मिडल लॅमेला. Exactly. So that middle lamella is formed by this. है ना? And middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate, my dear student. Every day you are not able to answer simple question because you are not studying. Yeah. So that is how the cytokinase is achieved in case of plant cell by formation of cell plate. Cell plate formation is by means of this phragmoplast. Phragmoplast is arrived from Golgi complex. They move from center to periphery and hence it is centrifugal. It is centrifugal. And ultimately that can get converted into middle lamella and one cell is getting divided into two. Okay? Clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. There are certain modifications into mitosis. So what are the modifications? Okay, so that is by means of formation of cell plate. A plate that develops at the midpoint between the two group of chromosome in a dividing cell and that is involved in forming the wall. जे काही मी आता एक्सप्लेन केलं. That represent the middle lamella. Already I explained this. है ना? Cell plate that represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cells. So see here. Yeah. So this new cell wall is formed. What is the outermost layer in the plant cell wall? Go back and check हा प्रश्न मी तेव्हा पण विचारला होता. What is the outermost layer in the plant cell wall? Yeah. Outermost layer in the plant cell wall is middle lamella. Go back and check. Okay, the way you are saying, Prathamesh, कि मला सेल सगळं येतं, सेल तसं नाहीये, हा. You randomly check some lectures and then you will understand it is much in detail what you learned in your 10th standard. So the outermost cell wall तर आपण खूप डिटेल मध्ये घेतलं होतं plant cell wall. So please go and check. So the middle lamella is the outermost layer in the plant cell wall. And this is from center to periphery, hence it is centrifugal type. मॅम एक मिनिट स्लाइड मागे करता का प्लीज? Okay. थैंक यू. Okay. Chalo, so during cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid and everything get distributed into the daughter cell. Okay. And now this is the question. What is a syncytium? So this is the modification. This slide मागे पुढे झाली.
So this is the modification of mitosis. Okay, syncytium, or this is because of the, so first modification, this is because of the free nuclear division. So this is the first modification. इथे लिहिते. So free nuclear division. Okay. काय होतं कॅरिओकायनेसिस. नाव द सेल, इथे कॅरिओकायनेसिस झालं म्हणजे न्यूक्लिअरचं डिव्हिजन झालं टेलोफेज मध्ये. अंडरस्टँड दिस. इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लीज आस्क. So the telophase मध्ये, like it is a reverse of prophase, and this should be followed by cytokinesis. But this is not getting followed by cytokinesis, and so in a cell, the so many nucleus arises. So this is a multi-nucleate condition. Multi-nucleate, multi is many, nucleate. So multi-nucleate condition is due to free nuclear division. Understood what has happened? सेल मध्ये कॅरिओकायनेसिस झालं. कॅरिओकायनेसिस एकदा झालं टेलोफेज मध्ये म्हणजे दोन न्यूक्लियस तयार होतात ना. येस. हा, तर हे कॅरिओकायनेसिस हॅज नॉट बीन फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस आणि परत ह्यांनी कॅरिओकायनेसिस केलं. अगेन इट वेंट फॉर कॅरिओकायनेसिस. And this way it gives a multi-nucleate condition because there is no cytokinesis. So multi-nucleate condition. And this multi-nucleate condition is called as syncytium formation. Right? Multi-nucleate condition which is called as a syncytium formation. And the classic example for this is liquid endosperm in coconut. कोकोनटचं पाणी जे तुम्ही पितायत ना, कोकोनट वॉटर, that is actually this multi-nucleate condition, and that leads to the watery appearance in the coconut. So this is very, very favorite question in NEET exam. Free nuclear division is what? Or free nuclear division is observed in, that is the liquid endosperm of coconut. Right? Did you get this? Yes. Yes, ma'am. Yes. Shall I go ahead? So Yes. see the multi-nucleate condition. Okay. This is a syncytium. The same way I have drawn here. Right? Okay. So the free this is what is a free nuclear division. So that is the first modification. Cytoplasm, karyokinesis is not followed by cytoplasm, and hence, so coconut च्या आतमधलं हे खोबरं आहे व्हाईट है ना. So this is a solid endosperm. आता एंडोस्पर्म काय आपण बघणार आहे, आणि बाकी जे काही लिक्विड आहे त्याच्या आतमध्ये. ओके, that is a liquid endosperm. This is because of the first modification, pre-nuclear division. Right? Second modification in this is endomitosis. And endomitosis is happening because of colchicine. Colchicine नावाचं एक केमिकल असतं. ओके, लक्षात घ्या, हे काय ते वाचण्याआधी मी काय सांगते त्याच्याकडे लक्ष द्या. कोल्चिसिन नावाचं एक केमिकल असतं. सो हे केमिकल काय करतं की जेव्हा द मायटोसिस इज ऑन मेटाफेज स्टेज, इथे मायटोसिस मेटाफेज स्टेजला आली, राइट, and when you apply colchicine at this particular stage, ह्या क्रोमोझोमचं हे कोल्चिसिन मुळे ती मेटाफेजला अरेस्ट होऊन जाते. मेटाफेजला अरेस्ट होते. मेटाफेजच्या पुढे सेल डिव्हिजन नाही करू शकत. ओके, कळलं का? या मेटाफेजच्या पुढे या जाऊ शकत नाही. आणि जेव्हा याला एपीसी टाकले, दॅट इज अ एनाफेज प्रमोटिंग फॅक्टर्स और कॉम्पोनंट्स, हा, तर ती फक्त एनाफेज मध्ये जाईल जिथे 2n ची प्लॉइडी काय होऊन जाईल, 4n.
बरोबर ना, आणि त्याच्या पुढे जाणार नाही. मग सेपरेशन ऑफ क्रोमोझोम इज प्रिव्हेंटेड आणि मग इथे त्याची प्लॉइडी वाढून जाईल. सो टू इंड्यूस द पॉलीप्लॉइडी म्हणजे एका सेलची प्लॉइडी 2n पासून 4n करायचे असे बरेचसे फ्रुट्स आहेत, जसं वॉटरमेलन, दॅट इज अ पॉलीप्लॉइडी फ्रूट. ओके, अँड वेअर दिस कोल्चिसिन कॅन बी अप्लाइड. ओके, सो व्हॉट स्टेज ऑफ मायटोसिस डज कोल्चिसिन अफेक्ट, हे तुम्हाला क्वेश्चन येतो. सो कोल्चिसिन्स prevent spindle formation during mitotic metaphase and thus preventing the separation of chromosome during anaphase stage. Anaphase ला ते क्रोमोझोमला सेपरेट होऊ देत नाही आणि त्याच्यामुळे सेलची प्लॉइडी वाढून जाते. Okay, and that process is called as endomitosis. So this type of chromosome is found in the salivary gland of Drosophila and other flies. Okay, salivary gland of Drosophila and other flies मध्ये ह्या प्रकारचे क्रोमोझोम नॉर्मली प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, हे नाही लक्षात राहिलं तर कमीत कमी कोल्चिसिनला लक्षात ठेवा आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मायटॉटिक पॉइझन. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज अ मायटॉटिक पॉइझन that is arresting the stage, that is arrested the cell division at metaphase stage. Clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. All right, now the significance of mitosis. So what are the significance? It is a equational division. It is restricted to diploid cell, or you can here write it is observed in all somatic cells, all body cells. Okay, which are the somatic cells? The RBC, WBC, hair cell, muscle cell, neuron, हे जे काही cells आहेत ते सगळे diploid cells. They are the somatic cells. So we know there are 200 different types of cells. So these are the somatic cells. However, in some lower plant and in some special insects, haploid cells are also divided by mitosis. हॅप्लॉइड सेल असेल N, they are getting divided by mitosis, तर ते N आणि Nच प्रोड्यूस करणार. सम लोअर प्लांट्स मध्ये ही मेकॅनिझम दिसते, ती आपण त्या प्लांट्सच्या वेळेस शिकणार आहे. बट देन येस, सो मायटोसिस कॅन हॅपन इन डिप्लॉइड सेल as well as in haploid cell. But majorly we remember it as a diploid cell and we say exceptions are always there. कायम exceptions असतात. Okay, so that is in case of haploid cell. मी हा सेशन क्लोज करते, आपण परत रिस्टार्ट करूया. ठीक आहे? ओके मॅम. Yes, ma'am.